outline of all the three papers in detail, like what exactly they are going to cover or ask, and even with their objectives, especially for today. So now we are going to start with the clinical specialization, and so they have termed the paper that it's psychopathology, abnormality of it. So that's a scope काय आहे, and even job perspective, applied perspective also in brief of this particular syllabus we have discussed. So now to start with about this particular first chapter, what do you know about abnormality or mental illness, psychological disorders also we can say, abnormal behavior, something different which we can say. किंवा ज्याला सोप्या भाषेमध्ये वेडे असं म्हणतात, पागल, mental, crack, psycho, psychic, so many terms we use some or the other way. So what exactly it is, according to you, in a layman perspective also you can answer. No. The behavior which is not as per social norms. For example, talking to yourself, chalte, हाँ. But if you are alone in the room and if you are having some kind of loud thinking, कि आज 500 रुपए मिले हैं, लेकिन फिर पापा अभी पर मुझे 300 का जियो का रिचार्ज करना है, उसके बाद फिर 200 रुपए बचेंगे तो क्या करना है, फिर कैसे कर सकते हो, वगैरह वगैरह. So this type of talking, self-talk, so we can't label that it is abnormal. बस स्टॉप पे कोई है और बस अकेले ही बातें कर रहा है खुद से, और वो भी लाउडली, देन वी मे से दैट यस कुछ तो अलग है, कुछ तो गड़बड़ है. ओके, वन. एनी अदर थिंग? Abnormal behavior or psychopathological behavior means exactly what, according to you? Tamanna, you say any guess? Have you seen any movies related to psychological illness, psychological disorders? Hindi, Marathi, English, anything? Like Gajani, abnormal. Karthik calling Karthik, correct? Yes, absolutely. And correct, absolutely. multiple We have 2 to 3 movies related to multiple personality disorder. भूल भुलैया है, अपरिचित, उसमें पूरा स्प्लिट पर्सनालिटी ब्लैक है. नहीं ब्लैक नहीं, ब्लॅक करते ब्लाइंड ग्रुप करते. अभिषेक बच्चनचा कोणता? अच्छा, ओके. बर्फी, ऑटिझम, ऑटिस्टिक, ऑटिझमचा तो कॅरेक्टर शी हॅज. ओके. सो इफ यू even Hrithik Roshan's कोई मिल गया movie, it is related with mental retardation or intellectually challenge, also we can say. Learning dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, dyslexia, learning disorder in short we can say. So in all these movies they have portrayed some or the other way the abnormal behavior. Now what exactly it is, so that we are going to study in detail. All these books, as we have discussed already, either in hard copy or in soft copy, I will share with you. No issue. Even Carsonच्या 2 copies are like extra copy, so you can use. Now before starting this particular actual syllabus wala point,
as we have discussed है applied perspective या फिर इस particular study circle का approach क्या है और क्यों, why it is important to study this particular paper academic के लिए भी और उसके बाद के लिए भी, for job perspective also, such kind of information it will help you even in your interview. For example, it is your skill how you are going to sell yourself. तो का बरं क्लिनिकल सायकोलॉजी घेतलं किंवा ते करून काय करणार आहे या फिर इसमें क्या स्कोप है. This particular statistics, let's see, approximately 150 million people in our country, they need therapy for psychological imbalances some or the other way. So see how much scope we have. काय उपयोग है साइकोलॉजी करून, काय जॉब, काय प्रोफाइल है, बहुत कुछ है. It is our skill how we are going to present and market ourselves. But less than 30 million people they seek help. So see the gap. 120 million people. And nowadays through this online mode, sky is the limit for us. अर्थात पण मग याच्यासाठी आपलं conceptual understanding हे important आहे. So then only we can reach the maximum. The requirement is around 55,000 mental health experts, and currently there are only 7,000 people or experts who are working. Psychologists मिळत नाही लोकांना, चांगले psychologists ते जो actually who will be able to address the disorder, who will be able to diagnose particular disorder, who will be able to write that particular report in a more appropriate form, and even who will be able to counsel that particular group. Either it can be child, adolescent, adult, or even old age group. Likewise. Plus, as per WHO, 1 out of 5 people they suffer from mental disease. They haven't labeled any particular psychological illness as such, but some kind of psychological disturbance. 1 in 5. Right now we are 5. We all have equal probability, including me. Psychologist है तो स्ट्रेस होता ही नहीं है. It is not like that. तो बाद में साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन पहले तो इंसान ही है. Exactly. First he or she is human being. So same thing with even counselors. So this particular paper, it will touch some of the core beliefs which we are holding some of the other. Psychologists आहे, मग काय असंच व्हायला पाहिजे, तसंच व्हायला पाहिजे, असं व्हायलाच नको. It is not like that. Another thing is, at present, okay, psychiatrist का रोल अगर हमारे जोन में नहीं आता है, but still psychologist only 1,000 and requirement it is around more than 20,000. So see how much scope it is there for this particular paper. So clinical psychology मध्ये MA करतोय म्हणजे काय, तुम्ही फक्त वेड्यांसाठीच काम करणार का? ऐसा नहीं है. इंसान पागल ना हो इसलिए भी हम काम करते हैं, and even so as a prevention purpose also, and even for मेंटेनेंस पर्पस. अभी तो मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में स्ट्रेस ना हो इसलिए आई एम स्टडीइंग. सो व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट. सो क्लिनिकल सायकोलॉजी म्हणजे फक्त ते मेंटल लोकांसाठी असं नाहीये. दिस पेपर अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर पर्सनल लाइफ. घर के रिलेशंस अगर डिस्टर्ब होते हैं तो क्यों होते हैं, this paper will tell you in much more scientific way. एक हफ्ता 2 हफ्ता अगर हमारी नींद ठीक से नहीं हो रही है तो एग्जैक्टली क्यों और कैसे, उसके पीछे का कॉज क्या है, एंड हाउ टू वर्क ऑन इट. ईटिंग डिसऑर्डर चैप्टर विल हेल्प यू. सेम थिंग विद sleep disorder also. And the moment we are going to study etiology or the paradigms of this, it will also help you to understand that how your current lifestyle it may affect you in future some of the other, especially future mothers म्हणून जर आपण बघितलं
हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ हमारे अपकमिंग जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हम ही स्ट्रेस में हैं, हमारे लिए कुछ अलग टाइप के एक्सपेक्टेशंस है, देन इट मे गोइंग टू convert some or the other way, likewise social workers and even nurses. So what exactly mean by abnormality? The first point, if we touch, so can you ask first question to yourself honestly, am I happy in my life? And the last word, always. Always एकदम हैप्पी मैन या फिर गौतम बुद्ध किंवा एकदम साधू संत कोणीतरी कोई भी कुछ भी बोले फिर कुछ भी हो, हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है। एग्जाम का टाइम टेबल आए तो भी हमें टेंशन नहीं आता है। ऑनलाइन से ऑफलाइन होगा तो भी हमारा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है। इज इट सो? दैट मीन्स एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ we do get disturbed, we do get emotionally upset. Getting emotionally upset and the frequency, duration and intensity of this particular emotional imbalance, it will differ from person to person and it will differ from particular situation to situation also. एग्जाम का स्ट्रेस इससे बहुत होगा, इससे कुछ नहीं होगा। रिजल्ट का स्ट्रेस इससे बहुत होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इट मे डिफर this particular point, and that's why it is important to understand that why, how and in which particular manner we get emotionally upset or disturbed. 50% of the population, as per record, nowadays it is beyond, they are having some of the other psychological or mental disorder. These are the four main criteria or indicators as per syllabus point if we say. Indicators of abnormality. नेमकं वेड किंवा सायकोलॉजिकली डिस्टर्ब असं कोणाला म्हणायचं? These four. Once you are able to understand these 4 points, you will be able to interact with people in much more deeper way. Discomfort, degree abnormalities apart. So into bracket I discomfort and suffering. For example, let's see the basic term. Stress. And we have 2 to 3 types of stress. Basically, positive stress it is there and negative stress it is also there. Distress and eustress. Like for example, okay, घरामध्ये जर का लग्न कार्य असेल, अगर किसी की शादी है या फिर गेस्ट आने वाले हैं या फिर कुछ और ऐसे पॉजिटिव इवेंट है, at that particular time also our eating pattern, sleeping pattern, it gets disturbed. बरोबर? 8 दिवसावरती लग्न आहे, सख्या भावाचं सख्या बहिणीचं, तर मे बी आपलं स्वतःच. सो मग तेव्हा काही आपण अगदी 10 वाजता झोपलो आणि 5 वाजता उठलो असं नाही करत. मग काय आणखीन ते संगीत असेल, फिर मेहंदी होगा, फिर नाच गाना होगा, आना जाना, फिर पार्टी वगैरह, फिर 12-1 बजे सोना, फिर 4-5 बजे उठ के फिर यहाँ फिर आना जाना वगैरह. सो तेव्हा पण स्लीप अफेक्ट होते आपली, खाने का ड्यूरेशन टाइमिंग भी अफेक्ट होता है, बट वी एंजॉय दिस स्ट्रेस. At that particular time, we can't say that yes, ये कुछ अलग है. But on the contrary, if it is about exam stress, घरातच असतो, पण तरी झोप लागत नाही, काही होत नाही किंवा काही कामसं वाटत नाही, सुचत नाही, सोचताही नाहीये, then it gets affected. This particular disturbed eating pattern, this particular disturbed sleeping pattern and other aspects,
it starts affecting our personal, professional, and even social functioning. Then we can say that yes, discomfort it is there. Another example, being a parent, you are absolutely okay. You are healthy, fine. But if you have a child who is ADHD, who is autistic, who is MR also, for example, or maybe even ALD, स्लो लर्नर किंवा काही आहे, तो ऐसे बच्चे को बार बार सोशल पार्टीज में लेके जाना आपके लिए इजी होगा, और विल यू बी कंफर्टेबल accompanying with that particular child? It creates social discomfort. सारखं सारखं कसं बोलतात, सारखं सारखं नहीं मतलब लोग हमला करतात, असं बोलतात, तसं बोलतात, फिर उनसे बातें करें या फिर इसकी ओर ध्यान दे, इधर हाथ लगाएगा, फिर ये चीज तोड़ेगा, फोड़ेगा वगैरह वगैरह. Professional. If you are unable to sleep appropriately for more than 2 to 3 weeks, आम्ही काल रात्री 2 वाजता पुण्याहून आलो, एका दिवसाचा वाट ऍब्सोल्युटली होते, फक्त 3-4-5 तास काहीतरी कशी तरी झोप झाली वगैरे फाइन. बट सपोज पिछले 1 महीने से इफ आई एम नॉट एबल टू स्लीप अप्रोप्रिएटली, इफ आई एम नॉट एबल टू हैव क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव स्लीप, तो फिर मेरा ये प्रोफेशनल बिहेवियर अप्रोप्रिएट होगा, और विल आई बी एबल टू concentrate to minute details? Of course not. Imagine a driver facing the same issue. That particular disturbed sleep pattern, it is creating professional discomfort for him. असा ड्रायव्हर जर आपली बस चालवत असेल तर डुलकी लागली की हे शरीरात. Likewise. Or the first one, as we have discussed. So paranoia, it is the core function symptom of schizophrenia. Constantly doubt or suspicious nature. सारखा संशय. एखाद 2 बार एक ऐसे लगना कि अरे रितिका कोणाशी बोलती है, एकदा दोनदा वाटलं ठीक, पण सारखं एखादी व्यक्ती जर का त्याचा फोन चेक करते, एखादी व्यक्ती सारखं जर का त्याच्यावर अगं कुठे गेली होती, अगं कोणाशी बोलत होती, अगं काय नाही, then personal relationships gets affected. That creates personal discomfort. This is the core reason for marital discomfort. घर बार सैलरी सब कुछ है, बस वो शक्ति गुंजाइश बहुत है. Since last 6 months, 1 year also, couple, these 2 people, they are not able to experience trust, or they are not able to have trust for each other, and that is creating marital discomfort. So that perspective there will be discomfort. Then it can be said that is something it is different. Second thing, maladaptive behavior. Adaptive means what? Change the form. Okay. Ability to change as per the situation, particular environment also. Adapter asto na, so they get adapt to that particular setting. In short, we can say. अभी अगर बारिश है, so carrying raincoat, it is adaptive behavior because we have accepted. हाँ अभी rain है, अभी बारिश है, and I want to protect myself. I want to take care of myself. I am getting adapted to this particular environmental changes. Fair enough. But some people, they are reluctant to adapt.
उनके लिए असा कोविड झालाच कसा. 4 महिने माझा जॉब बंद पडला नाही, मला हे एक्सेप्टेडच नाही. तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, रिलेशनशिप इश्यूज, and if you are not able to accept the fact, then it will start, you know, taking some toll. कोई एक पार्ट ऐसा है, कोई एक पर्टिकुलर चीज ऐसी है कि जो आपके कलीग में नहीं है, कोई वो एक चीज ऐसी है जो आपके पार्टनर में नहीं है, या फिर किसी और इंसान में नहीं है, विथ whom you are interacting every day. So two ways we can have: either one, accept as it is and trying to manage, or all the time, रोज सुबह यार निकिताला हे येत नाही यार, हिच्यासोबत काम करावं लागतं. सुबह 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 हर रोज आई एम पर्सन माय सेल्फ लाइक एनीथिंग. शी इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, बट ये मेरी सुबह ऐसी हो रही है दैट आई एम नॉट एबल टू हैव satisfaction with my job. So the concept related with again industrial psychology, that is job satisfaction. का बरं satisfaction नाही? Because adaptive acceptance होत नाहीये मला ती particular situation. Third thing is deviancy or violation of standards of society. Have you heard the term nude beach? Nude beach. In Western countries, they have this particular, what we can say, area or part also, की तिथे nude beach म्हणजे ती कन्सेप्टच अशी आहे की तिथे जो कोई भी मेल फीमेल जाते हैं उस बीच पे, दे आर nude in open place. तो काही ड्रेस नाही, काही नाही, एंड इट इज एक्सेप्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. अब वहां पे अगर हम ऐसे जाएंगे तो who is abnormal in this case? We are abnormal because we are not fitting with that particular standards. अगर वहां का कोई इंसान अभी यहाँ पे आया तो सो कॉल्ड अटायर में नूड कन्सेप्ट मध्ये आला तर abnormal झाला. आपण अरे बेटा अरे कपडे घाल. Standards of society in the sense norms, unwritten rules, but they are rules. How to behave, how to talk, how to interact, how to dress. Some kind of standards are there. घरात गाऊन घालू फाईन, आपण कॉलेजला गाऊन घालून येऊ का? रूल बुक मध्ये नाहीये कॉलेजच्या की तुम्ही गाऊन घालून येऊ नका असं, बट स्टिल वी फॉलो दिस पर्टिक्युलर अनरिटन रूल्स, स्टँडर्ड्स ऑफ सोसायटी. नाही, आपण क्लासला जातोय, आपण कॉलेजला जातोय, आपण मॅगडी मध्ये जातोय, काय अप्रोप्रिएट असेल, काय इनअप्रोप्रिएट असेल, वी थिंक अबाउट इट अँड देन वी ट्रेन आवरसेल्फ इन दैट वे. बट फॉर सम पीपल हम नहीं मानेंगे, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा. माय वे और हायवे कन्सेप्ट ऐसी, मी म्हणेन तसं, मी नाही तुमचं ऐकणार. Criminals, terrorists, and so the term is there, antisocial personality disorder. Particular specific psychological disorder, it is there, antisocial. So now suppose if you have a need of, say for example, 50 rupees, it is your urgent need or dire necessity right now, we can say. And if you ask to somebody कि अरे वाला 50 रुपए देशील का, अगर उसने मना किया तो क्या करोगे आप उससे? Your natural spontaneous behavior will be it's okay. और कुछ any other? मग काय करणार? पण तुम्हाला 50 रुपये हवे तर आहे, कन्विंस करू, ओके. उसके बाद भी अगर नहीं माना वो इंसान तो किसी और, यू विल फाइंड सम ऑल्टरनेटिव्स, राइट. 6 साल पहले अपने नासिक के पास ही
रियल इंसिडेंट ऐसे हुआ, 8th स्टैंडर्ड गाय, he asked 145 rupees to his grandmother and she refused. He killed her. आजीने 145 रुपये दिले आणि म्हणून आजीचा खून केला. सनकी, पागल, antic, antisocial, anti against the society, antisocial. This. But sir, हाँ. एक टर्म है, मतलब ऐसी हाँ, just curiosity कि ये करने के लिए सिर्फ वो 145 रुपीज नहीं ट्रिगर हुआ, मे बी Correct. समथिंग बैक उसको ट्रिगर हो Exactly. रहा था. Right. And then, but ऐसा न्यूज में ऐसा है कि 145 रुपीज 145, correct. तो इट इज राइट कि पीछे कुछ ट्रिगर्स हो रहे थे या फिर कुछ एबनॉर्मल पहले से बिहेवियर था. Yes, yes. वो नोटिस में नहीं आया. Correct. Then in that case also both the criteria are applicable. That particular child or that particular individual is unable to getting adapted with that particular thing कि yes ये इंसान कुछ मुझे कॉपरेट नहीं कर रहा है. म्हणजे जी काही नीड आहे ती ही आजी काही फुलफिल करत नाही पैसे देण्याची. मी सारखे माझं डोकं करते त्यासारखं नॅगिंग करते. तू काय केलं, तू काय खाल्लं, किंवा तू कुठे गेली होती आणि मग कोण आलं होतं, कोणाशी बोलली, काय बोलली. तो बहुत दिमाग में झिक 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 चालू था. इट में पॉसिबल फाइन. इरिटेशन तो हमें भी होता है बहुत सारी चीजों. रस्त्यामध्ये खड्डे आहे, रोज इरिटेट होते. एव्हरी इयर वी डू गेट इरिटेट. म्हणून काही आपण एखाद्या गव्हर्नमेंट ऑफिसरचा काही लगेच खून नाही करत. And understand the thing, especially in this case, the purpose, it is most important. Not only the activity. जैसे ही मर्डर्स, ऐसे ही किलिंग कुछ 100 साल पहले अपने ही यहाँ कुछ लोगों ने भी की. We are praising those people even today, calling them freedom fighters. मग का बरं आपले म्हणून ते चांगले असं? It is not like that. It is not like self-fulfilling prophecy. अपने हैं तो अच्छे हैं. Their purpose was quite different, and their actions were quite selective. Terrorists जे असं पब्लिक मध्ये शूट करतात ते रॅन्डम शूट असतात. भगतसिंग, सुखदेव किंवा राजगुरू किंवा जे कोणी आणखी नसतील ते. Their actions were quite selected to that particular person only. ये पर्टिकुलर ब्रिटिश ऑफिसर ने ये किया इसलिए हमने इसको मारा. That's it. So maybe टेररिस्टचा काही असा थॉट असेल की हा एक रिलीजन, मग त्या रिलीजनच्या अगेन्स्ट आहे म्हणून आम्ही. पण ते जेव्हा मास किलिंग होतं तेव्हा त्यांच्या त्या पर्टिक्युलर रिलीजनची पण माणसं मारली जातात ना. Then how can we say that yes, it is supported to standards of a particular society? It can be, it may be anything, but it is not, of course, like that. And related to this again, social discomfort. If a particular behavior is, creating some kind of discomfort or disturbance in society, that is abnormal behavior. कुछ 8-9 साल पहले वो पुणे में ही एक सनकी इंसान था. उसने कुछ एप्लीकेशन दिया था पहले. He was working as a driver in best company in buses. So earlier 2 months he was applying कि मुझे 3 या 4 दिन की छुट्टी दो, लेकिन वो अप्रूव नहीं हो रही थी. On 26 Jan only उसने क्या किया, उसने बस निकाली, वो स्वारगेट से निकाली, रफ ड्राइविंग स्टार्ट की. 10-12 लोग मारे गए. एक लहान मुलगा होता आणि एक अगदी प्रेग्नेंट बाई पण होती त्याच्यामध्ये. फिर उसके बाद वो मतलब जैसे वो एकदम टिपिकल हिंदी मूवी की तरह वो बस को रोका गया, उस ड्राइवर को पकड़ा, फिर उसका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हुआ, एंड देन इट हैज बीन diagnosed that yes, he is psychologically disturbed. He is unable to, he was unable to manage his personal
फ्रस्ट्रेशन होता है प्रोफेशनल लाइफ में। हर किसी को अपने जो कोई अथॉरिटीज है some or the other way, so they are not happy with those particular people, or maybe authorities also may say so that we are not happy with our junior colleagues और सबॉर्डिनेट्स, पर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने इसे कुछ पर्सनल हार्म किया, ऐसे नहीं। वो इजंट काउंटिंग उस एक दो घंटे के लिए, एक दो दिन के लिए, एक दो महीने के लिए फेयर, एक एक साल दो दो साल अगर वो है, सो देन वी यूज द टर्म होल्डिंग द ग्रज। सारखं आपल्या ते तिला बघितलं की सारखं काहीतरी ते खटकीच पडते निगेटिव्ह, देन वी कॅन से दॅट येस इट इज समथिंग विच इज डिफरंट, abnormality. Okay, Alright, any doubts so far? So हर एक चीज में बाइबल होता है, हर एक सब्जेक्ट में उसका उसका बाइबल होता है कुछ ना कुछ, किंवा त्यांची त्यांची भगवद्गीता असते किंवा त्यांचं त्यांचं काहीतरी पुराण असते और कुछ होगा। तो वैसे एबनॉर्मल का जो बाइबल है दैट इज DSM. We have current edition DSM-5. Earlier it was DSM-4TR. So this particular history also we are going to study in detail. It has been started from 1952. History of DSM ऐसा पॉइंट शॉर्ट नोट्स के लिए भी आ सकता है, और मे बी एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ abnormality. They can ask for 10 marks. Remember, in 4th sem, as we have discussed, you will have case study, and for that, external examiner, they may ask you the difference between DSM and ICD, or the difference between DSM-4 and DSM-5, because if you have done internship in abnormality, so they will test your fundamental knowledge. एखादा क्वेश्चन असा पण असू शकतो, तो वो होगा 4th सेम में, लेकिन उसका स्टडी अभी से जरूरी है। राइट नाउ टू बी सरप्राइज, there are 400 plus psychological disorders. On a lighter note, अपना दुकान अच्छे से चलेगा। काउंसलिंग ना भरपूर स्कोप, अगर कंसेप्चुअल स्टडी है तो यस, अगले 20-25 साल तक तो अपनी जनरेशन अच्छे से इसमें सरवाइव होगी। हाँ, और इसमें रिसेंट जो एडिशंस हो रहा है ना, तो वो तो और इंटरेस्टिंग है। ये तो टिपिकल स्टैंडर्ड ऐसे डिसऑर्डर हो गए, बाइपोलर, फूड डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, या डिप्रेशन, सुसाइड का सुसाइडल थॉट वगैरह वगैरह वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ सी न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब वो एलडी वगैरह, इफ यू अप्लाई फॉर स्कूल काउंसलर, सो दे विल आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलडी आर देयर। एलडी के मिनिमम 12 टाइप्स है, हमें सिर्फ 3 या 4 ही मालूम होते हैं। अविनाश इंटरव्यू मध्ये विचारलं होतं त्या प्रिन्सिपल मॅडम, एलडी चे टाइप्स किती आहेत, अविला विचारलं, उन्होंने कहा कि 12 टाइप्स है। हमारा एक बेसिक स्टडी होता है डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया और फिर कुछ और बस हो गए। हाँ, तारे जमीन पर मतलब हुई,
तारे जमीन पर मतलब एडी नहीं, it is just one of the aspect which they have shown. Schizophrenia, in Mumbai and in Pune they have support groups only for schizophrenia. पार्ट टाइम असे एक्टिविटी तुम्ही पण करू शकता. रिसर्च में अगर कुछ ऐसा टॉपिक लिया आपने जो एब्नॉर्मलिटी से रिलेटेड हो, इन फ्यूचर द सेम टॉपिक यू कैन यूज इट फॉर योर जॉब पर्सपेक्टिव. इट कैन बी एनीथिंग, एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, ट्रॉमा, स्पेशली गर्ल्स. आता इथे थोडं आणखीन असा पण यूज करता येईल पॉझिटिव्हच्या आहे. So many girls suffer from sexual harassment within family only. उनके लिए वो ट्रॉमा ही होता है. सो ट्रॉमा म्हणजे फक्त रेपच असतो असं नाही. इट कॅन बी एनीथिंग. Once we are able to understand this particular concept and the treatment for it, further you can attend some courses, read so many books, and then you can prepare your own module, your own set of treatment after a couple of years or so. असा पण स्कोप आहे. Even dissociative like अपरिचित or मंजुलिका, we can say. Somatic symptom, feeding, eating related issues, elimination. इव्हन मराठीमध्ये अतुल कुलकर्णींचा देवराई नावाचा मूवी है कि जो पूर्णपणे स्किझोफ्रेनिया वरतीच है. उसकी सीडी है, अगर पॉसिबल होता है, टाइम अवेलेबल होता है तो हम यहाँ पे देखेंगे. स्किज़ोफ्रेनिया अभी नहीं, अगले सेमेस्टर में होगा. स्किज़ोफ्रेनिया अगले सेमेस्टर में है, तो तब इन डिटेल देखेंगे. अभी रिपोर्ट राइटिंग के रेफरेंस से देखेंगे. रिपोर्ट राइटिंग का इवन एमएससी इन डायग्नोस्टिक वे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. OCD तो है ही, so nowadays it is quite common. Hand sanitizer हो या फिर कुछ और. And mood disorder, either depression, mania, so bipolar 1, 2, untreated. If depression left untreated, it turns to suicide. ये मला नाही म्हणाली म्हणून मी semester बघू. Another group of psychological disorders that is sleep with, even sexual dysfunctions. This is also one of the major reasons for having divorce. बाकी कुछ नहीं है, but one partner is unable to satisfy another one. So premature ejaculation, unable to experience that orgasm which they call it. इरेक्शन होत नाही, इधर मेल और फिमेलला. आणखीन बरेच काय काय आणखीन रिझन्स आहेत त्याच्यामध्ये. जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इट इज देयर. 4, 5, 6 साल का लड़का है बायोलॉजिकली, बट ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट आर लाइक टुवर्ड्स गर्ल्स ओनली. नाही मग ते गळ्यात घालायला आवडतं, मग ते कानात घालायला आवडतं, किंवा मुलींसोबत राहायला आवडतं, किंवा मग तसं ते अगदी पोनी वगैरे करायची. और मे बी वैसा वैसा है तो लड़की, लेकिन सारे इंटरेस्ट बिहेवियर इज कंप्लीटली लाइक मेल. Even destructive, substance related and addictive disorders. So high fever, emerging issue, addiction, unable to control. एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चालू है. अभी इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज है. इससे पहले सिर्फ टिपिकल था दारू का एडिक्शन, बट अभी इसमें स्मोकिंग आया है, व्हाइटनर है, विक्स आहे, इवन दैट काय पेंसिल मध्ये असतं लीड, वो खाने का एडिक्शन, उसके लिए ट्रीटमेंट करनी पड़ती है. डे एडिक्शन सेंटर में भेजा जाता है बच्चों को. वो एक बार इनमें का ही ग्रुप लेके गए थे हम पुणे को. वो वन डे ये था, स्टडी टूर था. तो तब 7 साल की एक लड़की उस डे एडिक्शन सेंटर में आई थी. उसे व्हाइटनर का एडिक्शन था.
चॉक असेल, फक्त दारूसाठी 15-25 लाख खर्च केले जातात. अनेबल टू कंट्रोल ॲट व्हॉट कॉस्ट. रिलेशनशिप का टोल तो अलग, फिर बीवी छोड़ के गई, फिर बच्चों ने भी उसे घर से निकाल दिया, पण मला दारू पाहिजे, ये थॉट है. सो दिस पर्टिक्युलर थिंग इट इज देयर. फूडचं पण करेक्ट, ते इटिंग मध्ये येईल. तो ऐसे भी होता है, इट इज कॉल्ड एज कोमॉर्बिडिटी. लाइक बुखार है तो खांसी होती है, बुखार इट इज प्राइमरी, खांसी इट इज सेकंडरी. सो सेम थिंग, एडिक्शन आहे आणि इटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन है और एंजाइटी है, मूड डिसऑर्डर है और स्लीप डिसऑर्डर भी है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल. You will get some patients who will be carrying some combo offers with them. A combo offer there, depression and sleeping disorder. मग ओळख करता, अच्छा eating disorder पण आहे, तो क्या prominent है. Now here it is required which is primary and which is secondary. लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जर का गडबड झाली तर सगळं फसलं. Other mental health issues and other things. Now see the size of this particular child skull. This is called as hydrocephaly. डोकं किती मोठे बघा, और ये जो पीछे का पार्ट है इसमें बाकी कुछ नहीं, इसमें सिर्फ पानी है. सो दैट है हाइड्रोसेफेली. और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, दे हैव वेरी स्मॉल साइज स्कल, इट इज कॉल्ड एज माइक्रोसेफेली. वो जब एमआर का हमारा टॉपिक होगा तब इन डिटेल डिस्कस करेंगे. And plus, in addition to all these particular things, internet addiction disorder, WhatsApp addiction, they have termed it selfie addiction, gaming addiction. आपल्याला आहे वो एपीए का एक जर्नल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मॉनिटर नाम का जर्नल. आफ्टर एवरी 3 to 4 months दे पब्लिश. उसमें एक सेपरेट आर्टिकल उनका स्क्रीनिंग को लेके है, स्क्रीन टाइमिंग. इन दैट सो दे हैव सेड मेंशन दैट एज पर सर्वे फॉर मींस चिल्ड्रन, screen time every day if it's 4 hours 50 minutes, and for adults it is 7+. और ये स्क्रीन टाइम, इसमें जीमेल भी आएगा और गेमिंग भी आएगा. एडिक्शन मीन्स व्हाट? एक्सेसिव यूज इज व्हाट इज एडिक्शन. आता वर्क फ्रॉम होम जर आहे तर आपण काय त्यांना एडिक्शन एबनॉर्मल असं नहीं म्हणू शकत, वो उनका काम ही है. बट हमारा क्या होता है, यूट्यूब के रील्स देखो एक के बाद, जीमेल ओपन करो और इमीडिएटली फेसबुक पे स्विच करो. फेसबुक पे कुछ देखते हैं तो अगेन व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें चले गए, मग तिथे स्टेटस बघत बसलो. मध्येच काहीतरी पॉपअप झालं गेमिंगच्या ऍप्सचं, मला लगेच तो गेम सुरू केला. पता ही नहीं चला 4 घंटे कब निकले. और फिर अरे टाइम टेबल देखने के लिए तो मैंने फोन हाथ में लिया. In the month of May, 8th standard guy, he approached for counseling. He himself approached and he said कि अरे दादा काउन्सिलिंग मला म्हटलं का बरं. He said 2 things immediately. He said की मला पॉर्न साइटचे ऍडिक्शन आहे आणि दुसरं म्हणजे हर्बल स्मोकिंग. हे काय? Then he said की
सिगारेट असते पण त्याच्यामध्ये लवंग वगैरे आणखी बाकीच्या गोष्टी असतात, ते मी अधूनमधून घेतो, पण घेतो ते. 8 स्टँडर्ड का लढतात. आणि म्हटलं पॉन सेट्स म्हणजे नेमकं काय? हे सेट की रेग्युलर पॉन बघून मला बरं नाही वाटत. रेग्युलर पॉन म्हणजे काय? ही सेट की रेग्युलर पॉन इट इज लाईक हॅव्हिंग ओनली सेक्शुअल कंटेंट, बट द थिंग विच ही सेड की मला असे पॉन्स बघायला आवडतात की ज्या व्हिडिओज मध्ये हॅरेसमेंट आहे, व्हायलन्स आहे. तो मेल त्या फिमेलला ब्रुटली मारतो आणि मग जेव्हा ती फिमेल ओरडते ते बघून त्या माणसाला जो आनंद वाटतो ते बघितलं की मला बरं वाटतं. सोळा किती वेळ बघतो साधारण? मिनिमम 3 तास रोज. तेवढं बघितल्याशिवाय बऱ्याच वाटत नाही मला. कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, कम्फर्ट. मिनिमम 2 से 3 घंटा तो मैं हर रोज फोन देखता ही हूँ. अगर नहीं देखा तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता. लॉकडाउन में एक दिन ऐसा था कि कंटिन्यू 10 आवर्स. इमेजिन द साइकोलॉजी बिहाइंड इट. वो क्यूरियोसिटी, कुछ अलग वगैरह, वो अट्रैक्शन, टू सम एक्सटेंट वी कैन से फेयर इनफ, वी कैन अंडरस्टैंड. 10-10 घंटे वो एक ही चीज, एक ही एक्टिविटी देखना, और वो भी ऐसे निगेटिव वे में. दिस इज व्हाट वी कैन से abnormal, something different. The intensity, the degree, the duration. And then I asked कि साधारण कधीपासून? He said कि जब मैं 4th स्टँडर्ड में था तब से. मागची 4 वर्ष मी पॉन बघतोय असं तो म्हणाला. ही नाशिक मधली ट्रू केस. 8वीतला मुलगा. इमॅजिन इंटरनेट एडिक्शन, स्क्रीन. 2-3 घंटे आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपका घर का काम किया है आपने, और कुछ किया है, एंड फॉर जस्ट फॉर फन पर्पस और चेंज एंटरटेनमेंट पर्पस आधा घंटा आपने यूट्यूब देखा, आधा घंटा आपने नेटफ्लिक्स देखा. फेयर इनफ. यू आर हैविंग कंट्रोल ऑन योर ओन बॉडीली मूवमेंट्स. वो डिज्नी हॉटस्टार कब ऑन करना है, कब बंद करना है, यू हैव कंट्रोल. दिस इज नॉर्मल. तर माझ्याकडून ते ऑफचं बटन दाबलंच जात नाही. I am unable to control my own behavior. This is abnormal. Even they have added the term WhatsApp selfie addiction. फोटो काढायचा, पोस्ट करायचा. कितने लोगों ने देखा, बार बार चेक करना. कितने लोगों ने लाइक किया, बार बार चेक करना. And some people are getting depressed because of this. आज मिनिटं झाले, कसंही काहीच नाही आलं माझ्या टिकीला. जाऊ दे, चेंज करतो. ऋतिकाने तमन्ना सोबतचा फोटो ठेवला स्टेटसला, पण निकिता सोबतचा नाही ठेवला. निकिताला डिप्रेशन आलं. There are people, there are, cases for this counseling. मागच्या काउन्सिलिंग कोर्सच्या बॅच मध्ये एकीने सांगितलं की ते काय, कौन-सा तो वो अलग ऍप है, स्नॅपचॅट करके कोई, माहिती पण नहीं, येत पण नहीं. तो उसने कहा कि सर उसके ऊपर से झगड़ा होता है दोस्तों में. हाँ, आणि ते स्टोरीचं काहीतरी असतं ना, 24 आवर्स मध्ये परत काहीतरी ते रिप्लाय करणं का टॅग करणं का संपलं. फोटो पाठवायचा. ओके, हा हा. आणि दोघांनी 24 आवर्स मध्ये पाठवलं की ते नंबर वाढत जातात. 1, 2, 3 माझे दिवसाचे एक नंबर वाढतात. पैसे मिळतात का नाही ना. मग काय. पण ते एका साईडने समजा मी मला नाही पाठवलं ना सर, तर मग ती जेवढे दिवसाची स्ट्रिक असते ना, फॉर एक्झाम्पल 30 डेज आपण एकामेकांना फोटोज पाठवतो, ती तुटते. एक दिवस एका दिवसाने नाही पाठवलं, बरं, मग त्याच्याने कॉन्फ्लिक्ट.
कि इतने दिन का स्ट्रिक कैसे तोड़ दिया? Abnormal functioning. To what extent? अगर काय रे तू मला नाही पाठवलं, असं पाठवायला पाहिजे. तर ये एक बार बता ना आलं. फ्रेंडशिप कॅन्सल. आजपासून तुझ्याशी बोलणार. Relationship is getting affected. This creates, disturbance in any kind of either personal, professional, or social relationships. So it is called as disorder. Now, what exactly and how can we define it? Yes, as we have discussed. So see, in brief, the indicators, the behavior which is statistically rare is what is, abnormal behavior. In Carson book, they have given this example, which is covering all these criteria. Say for example, रात को 9 साढ़े 9 बजे है, आप मॉडल कॉलोनी पे खड़े हो बस स्टॉप, आपको बस से सीबीएस पे जाना, महात्मा नगर वरून एक बस आली, ती बस पूर्ण रिकामी, ड्रायव्हर कंडक्टर बस ते दोघंच जण, बाकी कोणी नाही बस में. लेकिन 9:30 बजे है, बहुत भी लेट नहीं है, एंड बिकॉज इट इज इन गवर्नमेंट व्हीकल, सो यू स्टेप इनटू इट. तुम्ही त्या बसमध्ये बसला मॉडेल कॉलनीला, ती बस आणखीन थोडी सरकली, कॉलेज रोडला आणखीन एक माणूस चढला बसमध्ये, तो माणूस येऊन बरोबर तुमच्याच बाजूला बसला. इज इट नॉर्मल? पूर्ण बस खाली आहे आणि म्हणून तो तुमच्याकडे जर आला असेल तर अबनॉर्मल. आणि जर का पूर्ण बस भरलेली असेल आणि फक्त तुमच्याच बाजूची सीट जर का रिकामी असेल, त्या केसमध्ये जर तुमच्याकडे येऊन बसला तर, आर यू गेटिंग द पॉइंट? स्टॅटिस्टिकली रेयर, यस. ये एक पॉइंट आया, आप ही के बाजू में बैठे. मग कॅनडा कॉर्नरच्या पुढे बसने आणखी टर्न घेतला, आप दोनों में अभी तक कुछ भी इंटरॅक्शन नहीं हुआ है, पण हा माणूस मोठ्याने हसायला लागला. कसं वाटेल? Statistically rare, deviates from social norm. It is again unwritten rule. कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना है, बट है ना बाकी जगह, तो आप इधर ही क्यों बैठे? Causes subjective discomfort. Depression creates subjective discomfort. Sleep disorder, eating disorder are creating subjective discomfort. मला बरं वाटत नाहीये म्हणून मला खाणं जात नाहीये, इसलिए फिर मेरी नींद ये ठीक से नहीं हो रही. Likewise, doesn't allow you day-to-day functioning, can be anything or all the three, personal, professional और social. किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर से अगर मेरा कोई एक फंक्शनिंग या फिर तीनों फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, then we can say it's abnormal. कितनी वेगळ आहे, and either dangerous to self, suicide or others, antisocial, attack, harshness, harassment, abusive behavior, चाहे वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस हो, कुछ अटैक हो या फिर कुछ और, एसिड अटैक जे करतात ते मला नाही म्हणाली मग मी ऍसिड घेतलं, इट इज अबनॉर्मल.
Okay. Follow हो रहा है? पक्का? Yes. Now, only definition part it is remaining for this. That will continue. Some kind of college. First point we have discussed in detail today. Okay. Abnormality and these 5 indicators. In exam paper, they may use the word criteria of abnormal behavior or psychopathological behavior. Indicators, even criteria, checklist, or any other term they may use.